Good morning, everyone. My name is Ms. Barkha Singh, and I'm going to teach you a very important topic that is capacitor. So have a look. Capacitor is generally very important for our exam point of view as well as our basic understanding of electronic world. How exactly capacitor looks? They look like this. अराउंड अवर इन्वायरमेंट हमारे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं. उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ऐसे से कुछ कंपोनेंट्स हैं जो डिफरेंट कलर शेप एंड साइज के हैं. उनमें से एक है कैपेसिटर. वो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग एज पर देयर रिक्वायरमेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर यूज करते हैं. तो आज हम वही बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का होता है हम उनको स्टडी करेंगे, जानेंगे कि उनमें ऐसा क्या होता है, जब वो नहीं थे तब क्या प्रॉब्लम्स थी, उनके आने के बाद हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में क्या बूस्ट हुआ. वी विल लर्न ऑल दिस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द internal diagram of a capacitor. This is the internal diagram of a capacitor. Basically दो चार्ज प्लेट के अराउंड हमने एक वोल्टेज दिया, राइट. एंड तो हमने जब वोल्टेज सप्लाई देंगे तो पॉजिटिव चार्ज भी डेवलप होगा और नेगेटिव चार्ज भी डेवलप होगा अराउंड द कंडक्टिव पैनल प्लेट्स. एंड दिस इज द सिंबल फॉर कैपेसिटर. ये सिंबल हमें यू हेल्पफुल होगा जब हम सर्किट्स में एनालाइज करेंगे कि सर्किट्स का कॉम्बिनेशन क्या है या फिर सर्किट्स को हम सॉल्व करेंगे, तो दैट विल हेल्प. ओके, सो अभी फिलहाल के हमें ये समझना है कि हमने एक कंडक्टिंग प्लेट ली, उसके बीच में हमें डाइलेक्ट्रिक है. डाइलेक्ट्रिक क्यों होता है या हमने डाइलेक्ट्रिक क्यों डाला, डाइलेक्ट्रिक एग्जैक्टली क्या होता है, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, वी विल स्टडी इट लेटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड. कोई हमने कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट्स के अक्रॉस वोल्टेज सप्लाई दी एंड उसके अक्रॉस चार्ज डेवलप होगा प्लस क्यू भी और माइनस क्यू भी. ऑब्वियसली इट विल डेवलप अराउंड अ कंडक्टिंग प्लेट. सो what is exactly a capacitor? Capacitor, can we say it's a condenser? Yes, we can say it's a condenser. What is basically a condenser? It's a heat exchanger. Basically capacitor करता है क्या? It stores the energy and supply it once. हमें क्या जरूरत होती है, हमें कुछ ऐसी डिवाइस की जरूरत थी जो धीरे धीरे हम चार्जेस को स्टोर करें अपने, और जब हमें उसकी रिक्वायरमेंट हो एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग बूम एकदम से हमें वो प्रोवाइड करें. उसका ऐसी एप्लीकेशन जैसे कि मोटर हो गया, हमारा फैन हो गया, इवन जो हमारा कैमरा होता है जिसमें फ्लैश होता है, that also take the help of capacitor to do its work. So yes, we can say it's a conductor which stores electrical energy. It's a conductor which stores electric energy. पहले जब कैपेसिटर नहीं था तो हमारा एक प्रोसेस होता था इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट लेने के लिए. बैटरी सेल से हम केमिकल एनर्जी, देन फाइनली केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते थे. वो बेसिकली बोरिंग प्रोसेस था, बहुत डिले प्रोसेस था एंड उतना हमें एनर्जी भी प्रोवाइड नहीं करा पाता था. इस वजह से वी स्विच टू दिस ब्यूटीफुल कंपोनेंट दैट इज कैपेसिटर. So as I told you, what is the exact the need of a capacitor? We require it when some electrical devices require very high current in amount like 25 ampere to 50 ampere to start something like fan, motor, etc. Capacitance. Let's study this term capacitance. Basically, capacitance is a property of a capacitor. Capacity to hold the charge. Yes, हमें क्या चाहिए, चार्ज होल्ड करें या स्टोर करें एंड एनर्जी को हमें प्रोवाइड करें. सो इट इज द कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज और स्टोर द एनर्जी. Basically a very important property of a capacitor or a conductor. So we have a good formula to solve our another queries, that is C is equal to Q upon V. हमने as I told you हमने पोटेंशियल डेवलप किया एंड पोटेंशियल हमने प्रोवाइड किया एंड उसके क्रॉस पैरेलल प्लेट के क्रॉस चार्ज डेवलप हुआ. सो बाय दैट वी हैव फॉर्मूला Q अपॉन V. नाउ क्वेश्चन अराइज, क्या कैपेसिटर की यूनिट कूलम है? नो. हम कह रहे हैं एनर्जी स्टोर करेगा, तो क्या कैपेसिटर की यूनिट जूल है? नो. व्हाई नॉट? बिकॉज C डू नॉट डिपेंड ऑन Q as well as do not depend upon V. तो क्वेश्चन अराइज है, कैपेसिटर Q पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, V पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, तो किस पे डिपेंड कर रहा है? We will see. Basically capacitor depends upon the dimension. Basically capacitor depends on the properties of material. How? We will study it. Okay. So basically actual potential develop जो भी हम चार्ज लेंगे इनफाइनाइट से लेंगे. फिजिक्स में हमारे पास एक ही सोर्स है, कहीं से भी कुछ लेने का. अब हमारा बैंक जो है वो इनफाइनाइट सोर्स है, वहां से हम चार्ज लेकर आए. लेट स्मॉल चार्ज dq around a plate that have also positive charge around it. तो उस
चार्ज को इनफाइनाइट से लेके आने में हमें एक काम तो करना पड़ेगा, लाइक वी नो हम एक वर्क डन करना पड़ेगा एंड दैट वर्क डन विल बी dw. So by this relation we have a important formula v is equal to dw upon dq, that is charge and work done to take the charge from infinite to that particular point, and then potential developed across it denoted by v, that is equal to dw by dq. So basically when V decreases, the potential across the plate decreases, capacitance increases as per the relation. C is independent of Q and B and C depends on dimension and the property of the medium. Basic capacitor की जो unit है वो होती है हमारी farad. अब फ्रैड तो यूनिट होती है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करने के लिए कि हमारे पूरे जितने भी अप्लायंसेस में कैपेसिटर लगे होते हैं उनकी मैक्सिमम वैल्यू मिली फ्रैड माइक्रो फ्रैड तक ही लिमिटेड है. इवन डू यू नो आवर अर्थ इज आल्सो कैपेसिटर. यस, हमारा अर्थ जो है वो बहुत ज्यादा चार्जेस कंडक्ट करता है एंड इसकी वजह से कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी भी डेवलप करता है. एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट even earth has a very small value of the capacitor, that too in microfarad, that is around 711 microfarad. So ये भी इसमें beautiful सा concept है coronal discharge. Coronal discharge pollution of air. How it happens? Air में हमारे पास molecules होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, एंड कोई हमारे प्लेट है उसके अराउंड प्लस प्लस चार्जेस हैं, और जो एयर मॉलिक्यूल्स में हमारे नेगेटिव चार्जेस हैं उन दोनों में अट्रैक्शन होगा, बहुत हैवी अट्रैक्शन होगा, लाइक तो उसकी वजह से एयर में हमारी चार्ज मॉलिक्यूल्स विल गेट पोलराइज्ड एंड दैट्स व्हाई द पोलराइजेशन ऑफ एयर विल हैपन, एंड दैट इज द फंडा बिहाइंड द कैपेसिटर. Now we will study the type of capacitor, spherical capacitor or conductor. Let's study first spherical capacitor. Spherical है तो sphere उसका होगा and it will have a radius r and the charge will develop plus q. So we have formula C is equal to Q upon V. So as you can see, we know V is equal to KQ by R as we have studied previously. V is equal to KQ by R. And when we will substitute this value, Q get cancelled and we get this R by K. So इधर से हमें बहुत क्लियरली दिख रहा है कि जो C है वो ना Q पे डिपेंड कर रहा है ना V पे डिपेंड कर रहा है. इट इज डिपेंडिंग ऑन R अपॉन K. R का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? R is equal to, yes, R is equal to rho L by A. Rho resistivity, L length and A is the area. तो जो length है, area है या resistivity है, it totally depends on the property as well as dimension of a medium. So we have R by K. K value for a spherical capacitor, K is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. Epsilon naught is known as the permittivity, which is tells the property of a medium, of a material. So C is equal to 4 pi epsilon naught R is the formula in form of R, right? So energy basically stored in a capacitor, spherical, like this. Charge taken from infinite and then work done around to take that charge to that plate. So work done by external agent. Yes, to bring each dq element from infinite to the sphere is stored in the form of potential energy. And then, as I told you, it is dependent on the potential. It is stored in the form of potential energy. So हमारे पास एक beautiful सी derivation हम derive कर सकते हैं इसके according. Let to take at different t instance, t is equal to 0, t is equal to t and t is equal to infinite. At t is equal to 0, चार्ज डेवलप नहीं होगा, so q is equal to 0, वोल्टेज हम नहीं दे रहे, वोल्टेज is equal to 0, तो क्या c is equal to 0 होगा? Tell me, c is equal to 0 होगा? हमारे पास रिलेशन है ना भाई q upon v, तो क्या c is equal to 0 होगा? No. As I briefly described, c do not depend on q, c do not depend on v, it depends upon the property and the material and the dimensions of a particular substance. So हमारे पास चार्ज डेवलप हुआ and let v infinite is equal to 0 because we take it as 0 and dw upon dq, finally dw is equal to v dq. v हमारे पास क्या फॉर्मूला है by the relation q by c. अगर हम W एक्सटर्नल दैट इज एक्सटर्नल पोटेंशियल हमें निकालना पड़ेगा, वर्क डन निकालना पड़ेगा, तो हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट 0 टू Q by C हमने पुट किया, तो हमारे पास जो एक्सटर्नल वर्क डन है वो हमें कहाँ, हमें बहुत स्पेशल हमें वैल्यू देगा Q स्क्वायर अपॉन 2C, और हम डिफरेंट Q की वैल्यूज को यूज करके हम सब्स्टिट्यूट करके इसको अनदर फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं. लाइक आई शो दिस,
Q square upon 2C. C क्या आया हमारा 4 pi epsilon 2. So when we put the value of C is equal to 4 pi epsilon R, we get this beautiful relation Q square upon 8 pi epsilon R. तो अगर हमें न्यूमेरिकल में हमें R की वैल्यू दी है, Q की वैल्यू दी है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर हम आराम से निकाल सकते हैं. डू यू नो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इनसाइड? यस, इनसाइड इज 0. एंड अगर हमें C और V दिया है न्यूमेरिकल में, तो हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, हम ये पर्टिकुलर रिलेशन सब्स्टिट्यूट करके हम आराम से C और V की फॉर्म में हम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर निकाल सकते हैं, एंड आल्सो इन द फॉर्म ऑफ QV आल्सो. सो स्फेरिकल कैपेसिटर तो हमने पढ़ लिया, बट जस्ट थिंक स्फेरिकल कैपेसिटर की क्या प्रॉब्लम्स हैं. ऑब्वियसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. कोई भी चीज अगर हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होगी तो हमें इतनी सही एनर्जी एक टाइम पे नहीं दे पाएगी. जो चीज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो अनस्टेबल है. अगर एग्जाम के टाइम में अगर आपके नोट्स इधर उधर सब डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है, तो जब आपको रिवीजन करनी होगी, आपको क्विक रिवीजन करनी होगी, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, आपको सब ढूंढना पड़ेगा. उसमें आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा और आपकी इफेक्टिव कम वैल्यू निकलेगी. सेम विद द स्फेरिकल कैपेसिटर. इट हैज different very distributed form of energy, so very low capacitance. Because of this disadvantage, we reach towards parallel plate capacitor. Let's study the second type of capacitor, parallel plate capacitor. It is very interesting to know that fan has parallel plate capacitor. हमने कभी fan को कभी खोला नहीं है, but if you get the chance, just see the how capacitor basically looks into a fan. पैरेलल प्लेट में हमने दो पैरेलल प्लेट्स ली with small distance between them and the area A1 and A2 that should be equal, and एक प्लेट पे प्लस चार्ज, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज. अब हमने पैरेलल प्लेट ली तो हमारा क्या एनर्जी बाउंड हो गया. बेसिकली पॉजिटिव से नेगेटिव हमारा मूव कर रहा है, एनर्जी बाउंड होगा. जहां पर भी बाउंड होगी चीज, वो चीज स्टेबल होगी. लाइक गर्ल्स क्या करती है, अपने नोट्स ऐसे मैनेज करके रखती हैं, तो इस वजह से उनको बहुत क्विक रिवीजन हो पाती है, बहुत ज्यादा रिवीजन कर पाती है, वो अच्छे मार्क्स मोस्ट ऑफ द टाइम ले पाती है, क्योंकि बहुत मैनेजिंग होती है, बहुत ज्यादा चीजों को अच्छे से मैनेज करके रखती है, और उसमें उनकी एनर्जी सेव होती है, स्टेबल होती है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी रहती है. सेम विद दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. And one point should be noted, D, that is the distance between parallel plate should be very less than A. Why? So that capacitance can increase as per the studied relation. And it have the condition like D should be very less than A, and infinite plate should be there. Infinite हम एक relative term में बोल रहे हैं, right? And capacitance will increase and area should be equal. And so फायदा of the parallel plate capacitor will be, yes, energy will get bound, capacitance will increase. Basically, this is the internal diagram of a parallel plate capacitor. Free electrons positive charge से जाएंगे, free electron से negative charge की तरफ move करेंगे, and the potential हमें जो दिया है that is plus to minus V. So the charging of a capacitor basically getting equal and opposite charges. Now let's study the capacitance of a capacitor. As I told you, capacitor depends on dimension and the property. So let's plus sigma and minus sigma. Sigma is the conductivity developed across the charge plate. We have a formula E is equal to sigma upon 2 epsilon naught. Sigma conductivity, epsilon permittivity. It will define the material, and sigma define the conductivity developed across plate. Sigma have a relation Q upon A. So when we substitute sigma, that is Q upon A, we got Q by A to epsilon naught. And when we combine E1 and E2 to get the total energy, we get a relation sigma upon epsilon naught. Okay. So let's see E net, that is net energy is equal to Q upon A epsilon naught, and the potential developed for a plate will be E cross D as per the relation. When we will put E is equal to Q upon A epsilon naught, we get this relation. And now we know C is equal to Q upon V. तो हम V को substitute करके हम C का formula epsilon A by D prove कर सकते हैं. So we can say C depends upon the property and the dimension. And as C depends on dimension and medium, D should be very less than A, so that capacitance can increase. Let's have a numerical. अगर हमारे two plates दिए हैं, उनके बीच का distance हमें x दिया है, length दिया है, breadth दिया है. So what will happen? अगर हमें capacitance निकालना है, C हमने पढ़ा था epsilon naught A by D.
एरिया क्या होता है हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ. So when we put L into B, we get this beautiful relation. Let's study the another concept, that is combination of a capacitor. जो हमारा combination होता है वो series में भी होता है, वो parallel में भी होता है. We will start from the series combination. कुछ याद आ रहा है? रेजिस्टेंस के टाइम में हमने यही सब पढ़ा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है. थोड़ा सा इधर चेंजेस है जब हम उसको फॉर्म में देखते हैं. लाइक फॉर योर काइंड ऑफ मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ. जो वैल्यूज हमारी, या जो कॉम्बिनेशन हमारा रेजिस्टेंस के पैरेलल में होता था वो कैपेसिटेंस के सीरीज में होगा. जो कॉम्बिनेशन हमारा रेजिस्टेंस के सीरीज में होता था वो कैपेसिटर के पैरेलल में होगा. So V is equal to V1 plus V2, V3. We will see. Let's take 3 capacitor in series and connect them in series like this. Plus हम कितने भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं as per the requirement. प्लस चार्ज होगा, माइनस चार्ज डेवलप होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू accordingly. So see, capacitance will C1, C2, C3 and the potential applied is positive, negative voltage. So जब हम combine करेंगे तीनों का, क्योंकि potential series में divide हो रहा है. So V1 plus V2 plus V3 and the charge will be same because it's a series combination, right? The charge will be same. So Q plus Q upon C1 plus Q upon C2 plus Q upon C3. So according to this, we get a beautiful equivalent capacitance, that is 1 upon C1, 1 upon C2 and 1 upon C3 summation. Yes. कुछ कुछ ऐसा हमें रेजिस्टेंस के टाइम हमें मिला था जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे रेजिस्टेंस के, राइट? सो नाउ सी कैपेसिटेंस कॉम्बिनेशन इन पैरेलल. पैरेलल है, हमें कैपेसिटर 3 या 2 एज पर द रिक्वायरमेंट हमने इसको पैरेलल में कनेक्ट किया. अब हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज बहुत अच्छे से पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, लेकिन चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होता है क्योंकि यहाँ पर क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है. सो जब पैरेलल प्लेट 1 के अक्रॉस चार्ज डेवलप होगा प्लस क्यू माइनस क्यू, कैपेसिटेंस होगा C1, सेकंड प्लेट के अक्रॉस प्लस क्यू माइनस क्यू एंड दिस कैपेसिटर. सो वी गेट Q1 C1V, Q2 C2V and जब हम चार्ज को हम सम करेंगे we will get CB and that C is equal to C1 plus C2 will give the equivalent capacitance in parallel. and ये हमें क्या मिलता था रेजिस्टेंस के टाइम में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में और सीरीज में. टेल मी. यस, सीरीज रेजिस्टर के टाइम में हमें ये मिलता था. सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि जो कॉम्बिनेशन का सब्स्टिट्यूशन फॉर्म हमें रेजिस्टेंस में मिलेगा, कैपेसिटेंस उसके हमेशा अपोजिट होगा. Now study another concept, that is energy stored in a charge capacitor. Charge capacitor, I mean parallel plate capacitor. What kind of energy? Obviously is electrical energy. At different time constant, T is equal to 0, T is equal to T and T is equal to infinite. So let's see, plus Q to minus Q. Charge, go from one to another. C is equal to Q upon V. Simply external work done will be done. dW external upon dQ. That will be equal to dQ del V. Yes, so we have V is equal to Q upon C, and when we substitute in this, we will get this beautiful derivation to solve. We will integrate and then see 1 upon C come out, and we got this potential energy Q square upon 2C, and C is equal to Q upon V. As we know, Q get cancelled, we get Q by 2V, and then finally we get potential energy formula in the form of CV, that is half C square V square. And according to the numerical, we can see हमें किस फॉर्म का फॉर्मूला यूज करना है. ओके, लेट्स डू एन एग्जांपल. प्लस क्यू माइनस क्यू पैरेलल प्लेट, हमने एक इन दोनों के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया जिसकी परमिटिविटी है एप्सिलॉन. आई विल टेल यू व्हाई डाइलेक्ट्रिक लेटर, बट फर्स्ट जस्ट सॉल्व द न्यूमेरिकल. तो इनके प्लेट का डिस्टेंस 30 एंड देन फाइनली जब हमने डिस्टेंस डी को हमने 2D कर दिया तो क्या चेंजेस होगा. सो start with the external work done, which is change in potential energy from final to initial, the change from final to initial. And so UF minus UI, we will put Q square upon 2C. So get the C substitution epsilon A by D, we get this Q square upon 2 epsilon A by D. And finally Q square D upon 2 epsilon A. Okay, so as I told you, I will tell you the dielectric things. So let's start and study the fact of dielectric on capacitance. Dielectric inserted between plate of a capacitor. Why? Because it have
it gives our freedom, it gives us some freedom to change the property, to get that वैल्यू अकॉर्डिंग टू अवर एप्लीकेशन. हमें जैसी रिक्वायरमेंट हम डायरेक्टली में चीजें चेंज करके कैपेसिटी वैल्यू ज्यादा कम एंड अकॉर्डिंगली हम चेंज करके हम अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम फ्री हैं बिल्कुल. सो लेट्स डू some substitution here also. As I told you, C is equal to Q upon V naught also. C is equal to epsilon A by D as we proved. So sigma is the conductivity. So sigma difference, sigma minus sigma P. Sigma P is the polarization conductivity, right? So let's denote it by sigma by K. K is the constant. Yes, K is the constant of characteristic of dielectric. So by substituting these values, we will get epsilon K A by D. And as I have shown, epsilon K can be substituted by epsilon, that is permittivity of material. In vacuum, K is equal to 1. Epsilon is equal to epsilon naught, that is permittivity of vacuum. On we get the beautiful relation K is equal to epsilon upon epsilon naught. If K is equal to epsilon upon epsilon naught, we can get the equation in form of C and K, that is K is equal to C upon C naught, because C have a relation with epsilon. So we can say if epsilon have relation with K, C will have the relation with K. So and K always greater than 1 generally. And at last we can say K is a dielectric constant of a substance. Yes, we can say it is a dielectric substance of a constant of a substance, a factor, basically, yes, a constant factor by which the capacitance increases from its vacuum value. The capacitance पहले K की value 1 थी, अब वैक्यूम के टाइम पे, लेकिन जब हमने डायलेक्ट्रिक उसको अप्लाई किया तो K की वैल्यू हमारी बढ़ गई, greater than 1 हो गई. So we say by which the capacitor increases from its vacuum value when the dielectric is inserted between the plates of a capacitor. As it is shown in the figure, this dielectric value got inserted and finally K will get increased then 1. Okay, so for now it is I'm going to end here, and you will study another things later. First, go through with all these slides and all this content and understand. Just connect with the capacitor, see appliances around you. जिस भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कैपेसिटर लगा है, जस्ट लुक, हैव अ लुक कि क्या है, क्या वैल्यूज लिखी है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, क्या शेप है, क्या साइज है, उसमें क्या क्या चीजें लिखी हैं, उन नंबरिंग्स का क्या मतलब है. जस्ट गो थ्रू इट. ओके, थैंक यू सो मच.